We should remember that the concept of dying declaration is based upon the maxim of, यानी किसी भी पर्सन के जो लास्ट वर्ड्स हैं वो झूठ नहीं हो सकते हैं, बिकॉज उसको पता है कि इसके बाद उसकी डेथ होने वाली है एंड ही विल मीट हिज गॉड. अब इंग्लैंड में आप देखोगे दिस मैक्सिम इज फुल्ली एप्लीकेबल. इंग्लैंड में मैक्सिम फुल्ली एप्लीकेबल होती है बिकॉज इन इंग्लैंड देर इज अ कंडीशन फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ डाइन डिक्लेरेशन. वहाँ पे कंडीशन होती है कि डाइन डिक्लेरेशन जो है वो तभी एप्लीकेबल होगी अगर पर्सन को पता होगा कि उसकी डेथ होने वाली है एंड इस एक्सपेक्टेशन में उसने डाइन डिक्लेरेशन दी है एंड द पर्सन मस्ट बी इन एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ. In expectation of death while he is making the dying declaration for it to be admissible in England. For it to be admissible in England. लेकिन इंडिया में ये रूल नहीं है. इंडिया में the person can or cannot be in expectation of death while he is making the dying declaration. यानी अगर फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, ये बी को एक स्टेटमेंट दे रहा है लेकिन अभी ए को पता नहीं है इसकी डेथ होने वाली है. ही इज नॉट अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ. तो यहाँ पे अगर आगे जाके ए की डेथ हो जाती है देन द स्टेटमेंट कैन बी कंसीडर्ड टू बी डाइंग डिक्लेरेशन इवन इफ ए वाज नॉट अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ. तो जो हमने मैक्सिम पढ़ी है it is partially applicable in India. It is not totally applicable, but it is partially applicable in India. Yani if the victim knew that his death is approaching and in expectation of death, he makes a dying declaration, then this maxim will be applicable in India. But if the victim did not have the knowledge of his approaching death, then in that case, the maxim will not be applicable in India. And इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डाइन डिक्लेरेशन विल स्टिल बी एडमिसिबल बट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी. अब अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन it is believed that the victim was the best evidence. The victim was the best evidence who knew about the crime. But now the victim is dead. And cannot come to the court. Therefore, the last words of the victim will be taken to be as dying declaration. And will be admissible as per Bharatiya Sakshya Adhiniyam. आपको याद रखना है कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी इज एप्लीकेबल इन इंडिया एज वेल एज इन इंग्लैंड. डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के बारे में हमको पता होना चाहिए. Here out of necessity, the last statement of the victim will be admissible. तो मैक्सिम और डॉक्ट्राइन के बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए.